राधा सुनी संतों की बाणी बाणी स्वामी जी महाराज की वर्णन आत्म भक्ति का। भक्ति महात्म
कान। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी। This is the Bani of Param Sant Sadguru Swami Ji Maharaj. स्वामी जी महाराज कहते हैं सब संतों ने भक्ति की महिमा कही है, क्योंकि और भी सिद्धांत बहुत है, ज्ञान, वैराग और भक्ति। तीर्थ, व्रत, उपवास ये सब अलग हैं, लेकिन में ज्ञान, वैराग और भक्ति। All the saints have talked about the greatness of devotion. There are various paths which people follow, and these would be austerities, vairag or renunciation, and other processes. But all the masters have emphasized on devotion. क्योंकि ज्ञान में लोग पठन पाठन में ज्यादा ध्यान देते हैं, वेद शास्त्र पुराण पढ़ना और वेद ग्रंथ है, गीता भागवत पढ़ना, दूसरे को सुनाना, उसको ज्ञान। और वैराग्य में आता है घर मकान छोड़ देना, जंगल पहाड़ों में जाके रहना या हिमालय में जाके प्राणायाम ध्यान योग करना। So people usually focus on learning and reading. They read the sacred books, that is the Vedas, Puranas, Shastras, and Bhagavad Gita, Ramayana. They read all these various holy books, and they spend their lives in the discussions around what is written in these books and the learning of these books. And the other process which a lot of people follow is to renounce everything, to renounce their families, homes, and go in the jungles or go in the hills or mountains, and they become ascetics. तो कहते हैं उसी में भक्ति आता है। भक्ति चाहे आप घर में रहो या जंगल में रहो, भक्ति का मतलब नाम का रूप होना या भगवत का रूप हो जाना। चाहे बाल बच्चे में रहो या जंगल में रहो, इसका सवाल है। So devotion is the devotion is a process where you become one with God Almighty. You are lost in the thought of God Almighty. Whether you are staying at home, in the comfort of your home, or you are staying in the jungles or on some pilgrimages, but the devotion really relates to your love and affection to God Almighty. तो संतों ने भक्ति का मार्ग चुना है। संत मत को ये जो रास्ता है, ये वैराग्य और सबसे दूर हो गए। भक्ति चाहे कहते हैं कि रात दिन अपने गुरु की याद में रहना, सुमरन करते रहना, खेती करना, गृहस्थी करना, नौकरी करना और ख्याल उस नाम से जोड़ के रखना, तो ये सच्ची भक्ति है। इसमें भी रह के हम मालिक से मिल सकते। So saints have emphasized on the remembrance of God Almighty, doing their devotion, doing Simran and Dhyan, and remembering God Almighty all the time, whether they are at home or outside, and whether they are doing their work or they are sitting in meditation. So all the time to be doing Dhyan and doing Simran of God Almighty is what the saints are emphasizing. इसीलिए सब संतों ने भक्ति का रास्ता चुना और भक्ति की महिमा करी। So that is why the saints have talked about this form of devotion, and they have talked about the greatness of this form of devotion. यही मता गुरु मत पहचानो और मते सब झूठ बुलान, ये बिना भक्ति तो ते सब मानो, चिलका है नीगी की हाल। तो कहते हैं यही मता गुरु मत पहचानो, यही संतों का रास्ता रहा है।
इसे वो गुरुमत सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके भक्ति के अलावा, प्रेम के अलावा और जो भी कुछ है तो कहते हैं कि झूठी है, अंदर दिखावट होता है, अहंकार होता है। और जैसे चना है और दाल है, उसका छिलका अलग हो जाता है तो छिलके में साफ नहीं होता है, ऐसा होता है। उससे उतना फायदा जो मिलना वो नहीं मिल पाता है। So saints say that this is the true form of devotion, that is the remembrance of God Almighty, doing our bhajan simran and dhyan. That is the true form of devotion, and everything else that we do in as a part of devotion, all that the masters say is like the covering of lentils. So gram, the skin of the gram, it is like that. The main food or nutrients are in the seed, and the skin of the seed is thrown away. So all the other practices and all other forms of devotion are like that skin of the gram. तो कहते हैं कि इस तरह से भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। भक्ति में आशा और तृष्णा और कोई नहीं, जैसे और दूसरी भक्तियां हैं, कोई न कोई करते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, वो काम पूरा हो जाए, धन का लाभ हो, व्यापार बिजनेस चले। ऐसे संत मत में नहीं है। संत मत में कहते इन सब आशा तृष्णा से अलग होके एक मालिक के लिए मालिक की भक्ति करना। So this the masters say that this devotion, where we do the devotion only of God Almighty, for God Almighty, and do our bhajan simran dhyan of God Almighty, that is the true devotion. That is Sant Mat or Guru Mat. And everything else which we do, the devotion, it is linked to something that we desire. So we seek wealth or other pleasures, or for the family and other relationships or other things. All these drive our devotion, and in all that is in different types of practices that we do. So the masters say the true devotion is when you do it only for God Almighty, and you remember and you stay in His remembrance. क्योंकि भक्ति अपने आप को समर्पित करना सिखाता है, मांगना नहीं। अगर हम कुछ भक्ति करके किसी से कुछ मांगते हैं तो वो हमारा भक्ति निष्फल होता है। अगर कोई दुनियावी सामान भी मिल जाता है तो उसका संबंध शरीर के साथ यही रह जाता है, हमारी भक्ति यही पड़ी रह जाती है। The true form of devotion is where we have to offer ourselves to God Almighty, to our Sadguru. When we surrender or we offer ourselves and surrender to His will and do His devotion, that is the true form of devotion. When we do our devotion seeking other things or seeking having or linking it to any desire that we have, that is not true devotion. And also, even if we get what we are desiring as a part of the devotion, that is also not permanent, and it is not going to go with us. It is linked to this body and will have to be left here after death. कहते हैं कि गुरुमुख गुरु की भक्ति गुरु के लिए करता है। अगर गुरु उसके अंदर प्रकट होता है तो अपनी सारी बरकत लेके उसके अंदर प्रकट होता है, उसको फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। A true Guru Mukh, he does the devotion of his master only for his master. He doesn't do it with any other expectation or desire. And when he does so, the master gets pleased and he showers his grace and sits within that Guru Mukh. And once the master is sitting inside, there is no need for asking anything. Without asking, the master graces the Guru Mukh. क्योंकि गुरुमुख कहते हैं क्या मांगो कुछ फिर न आई, देखत नैन चला जग जाई। मैं क्या मांगो, दुनिया में कोई भी स्थिर नहीं है, सब चलाएगा। And the Guru Mukh also says that, what can I ask from you? He says to his master, because everything I see
is like a flow, it is going away, and there is nothing which is permanent or which will stay. So there is nothing that I feel like asking. जो आज दिख रहा है वो कल नहीं रहना है, जो कल है वो परसों नहीं रहना है, ये परिवर्तनशील संसार है, इसीलिए वो दुनियावी चीजों को नहीं मानते, वो गुरु से गुरु को ही मानते. Because whatever you see today is not there tomorrow, and what you see tomorrow is not there after a few days. So, and nothing is permanent here. And therefore, the Guru Mukh says there is no point asking anything which is not permanent. So, I only ask for the Guru, and that the Guru is what is permanent for me. बिना भक्ति तोते सब मानो, दिल का है मीगी की आन, ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो, और सयान पत जो निदान. इसलिए स्वामी जी महाराज कहते इसलिए भक्ति को दृढ़ करके पकड़ो, और जो बाकी जो बुद्धि ज्ञान का विचार है उसको छोड़ो, क्योंकि बुद्धि एक हद तक विचार करती है, हद से आगे नहीं सोच सकती. So Swamiji Maharaj says that hold on very steadfast to devotion and your love and affection, and leave everything else that you are doing with your intellect and with your thoughts, because after a point even the intellect doesn't stay, so it is only the devotion which goes further. तो कहते हैं इस भक्ति में अपना जो भी चतुरता है, बुद्धि ज्ञान है और कुछ भी वो सब छोड़ के दीनता नम्रता लेके जो गुरु कहता है उस पे चलना और रात दिन उस सुमरन का रूप होना, यही भक्ति है. So we should do our devotion by leaving all our intellect and thoughts aside and just follow what the Master is saying, doing that Simran and becoming the form of that Simran which he is asking us to do is the true form of devotion. इस तरह से हमारा ख्याल पक्का हो जाए, सुमरन बराबर चले, हमारा मन निर्मल हो जाता है, एक दिन स्थिर हो जाता है. तो कहते हैं तन स्थिर मन स्थिर वचन स्थिर सुरत निरंत स्थिर होए, कहें कबीर एक पलक को कलप न पावे कोई. तो कहते हैं ये अगर पांचों स्थिर हो जाए, कहते तन स्थिर मन स्थिर वचन स्थिर, शरीर स्थिर हो जाए, मन दोनों आंखों के बीच में स्थिर हो जाए और वाक्य बंद हो जाता है, जबान बंद हो जाता है, और सुरत निरंत आत्मा के दो अंग है, देखने और सुनने की ताकत, वो भी उसी नाम का रूप हो जाए. तो कहते एक सेकंड में अंदर प्रकाश हो जाता है. तो कहते हैं जो अनुभव एक सेकंड में होता है वो कल्पों की प्राणायाम अष्टांग योग जब तक से नहीं हो पाता है. So he says that we should do our devotion with humility. Kabir Sahib says that if we are able to keep our body still, keep our mind still at the eye center, and keep our tongue still, that is, no words are going through, and then with our soul, the Nirat and Surat, that is the faculty of seeing and listening of the soul, that is also still, and it is lost in Naam. It is connected to the sound current. Then, if all these five are still, then it will not take even a second for that light to be seen within. तो कहते भक्ति इतना ये है कि एक सेकंड में इतना अनुभव माने इतना आनंद मिलता है जो दूसरे भक्ति में सैकड़ों साल भी किया तो नहीं मिलता. And that is the beauty of this devotion, that in a second you will be able to get so much pleasure and happiness in that devotion which you will not get by
eons of time when you do other practices like pranayams or other practices. It will take you eons to come to a stage where you get this pleasure, which can be given, which can be sought if you just keep these five things still and get it in a second. तो कहते हैं इसीलिए इन सबको स्थिर करने के लिए हमें सुमरन ध्यान की जरूरत है कि धीरे धीरे मन से सुमरन, जबान बंद होकर मन से सुमरन करने लगता है और तुरंत निरंतर सुमरन का रूप हो जाता है तो तत्काल प्रकाश, और वो प्रकाश एक बार प्रकट हो गया फिर कभी जाता नहीं। आपके मरने दम तक आपके अंदर प्रकट हो जाता है। आप आंख बंद करो प्रकाश दिखाई देगा, आप आंख ये बंद करो सब सुनाई देगा, वो कभी बंद नहीं होता। So when you, that is why the necessity to do Simran with all humility. When we do our Simran and we sit still, the body also becomes still. And after a point, the Simran which we are doing with the tongue, that is done by the thought and then by the mind. So the mind starts doing the Simran. And our faculty of seeing and listening of the soul also gets merged into that Simran. And when that stage is reached, then that we are able to manifest the light within. Once we see that light within, it is always going to stay till our death. It is not something that we will see only once, but it will be with us throughout our life. ये पांच स्थिर होते ही ये आत्मा समाधि अवस्था में चली जाती है, ऊपर चढ़ाई करने लगती है और जो अनुभव होता है वो कभी बंद नहीं होता। So once this is achieved, the soul goes in a state of samadhi, and after that the soul starts ascending to higher planes, and this experience which the soul has got will not stop. Then after this the experience only increases. और एक जन्म में करोड़ों जन्मों के पाप एक सेकंड में दग्ध हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है, और मन निर्मल होने के कारण से ये अनुभव ऐसा ही रहता है। And in 1 second, the burden of karmas that we are carrying, the mind is carrying, not only of this life but all previous lives, all that is redeemed in 1 second. And the mind becomes very crystal clear, like a transparent glass. And that is why, because it becomes transparent and so clean, it is able to retain this experience and build upon it. ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो और सयान तजो निदान, भक्ति इश्क प्रेम तीनों नाम वेद है रूप समान। इसलिए स्वामी जी महाराज तारा देते हैं, भक्ति में इतना गुण है, भक्ति सच्ची है, इसीलिए आप भक्ति को पकड़ो और बाकी जो सयानक जो भी बुद्धि ज्ञान विचार अपना है उसको त्याग दो। एक गुरु जो कहता है आंख बंद करके उसके ऊपर अमल करो। So Swamiji says that therefore do your devotion, and because this is the truth, this devotion is the truth, and do this devotion, leave aside all your thoughts, intellect and your smartness. You sacrifice all of that and simply follow what the master is saying and do the devotion as he tells you to do. तो संतों ने इसलिए भक्ति के सिद्धांत को पकड़ा है, और भक्ति ही एक मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता है, और ये जो है बहुत सरल है। एक 6 साल का बच्चे से 90 साल के वृद्ध तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। Therefore, all the saints have held on to this principle of devotion because it is very simple to do, and a small child of 6 years to an old person of 90 years can easily follow this. कहते हैं जैसे जैसे हम सुमरन भजन से जोड़ देंगे, हमारा ख्याल दुनिया की तरफ से हटते जाएगा
नाम से प्रेम प्यार बढ़ते जाएगा और एक दिन नाम का रूप हो जाएगा. As we do more and more Simran and Dhyan, the mind will become purer and more sublime, and automatically we will start withdrawing from the pulls of this world outside. And once that happens, then we will be able to withdraw the attention and go within. तो इसमें मुख्य सुमरन है. सुमरन ही हमें 9 दरवाजे से निकाल कर 10वें तक लेके आता है, जिसमें हमें सुमरन दिया है गुरु के पास तक ले जाता है. So in all of this Simran, it plays an essential role, and it is this Simran which gets the attention of the soul withdrawn from all the 9 doors and comes to the 10th door and brings it to the master who has given you this initiation. तो इसलिए सुमरन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी. सुमरन जितना स्लो होगा उतना लेट कामयाबी. So the more Simran you do, the faster you will be able to progress, and you will be successful faster. And the slower and lesser Simran you do, the longer it will take you to progress on this path. क्योंकि हमारे पास को कर्म को काटने का जो साधन है वो सुमरन है, और सुमरन से हमारे कर्म कटेंगे, पाप कटेंगे, मन निर्मल होएगा. तो निर्मल होएगा तो हमारी तरक्की आगे बढ़ेगी. Because Simran is the instrument by which you will be able to cut your karmas, which you will be able to reduce the burden of your past deeds, and therefore the more Simran you do, the faster you will be able to redeem your deeds and go with it. सुमरन को हम बैठ के करना ऐसी बात नहीं है. चलते फिरते काम करते, खेती में काम करते हम सुमरन कर सकते. So it is not that Simran can only be done when you sit for meditation. You can make it a practice to do Simran during the day when you are walking, eating, doing your work, working in the farm, or doing any other thing. You can continue to do Simran. कैसे भी हम मालिक का नाम सुमरन करते हैं तो उससे फायदा ही फायदा है. हमारे कर्म करते हैं, मन निर्मल होता है. So when we do Simran in whichever form, it is beneficial because by that we reduce our the burden of karmas, and the master is also happy with this. क्योंकि मैंने अनुभव लिया है, जब बाबा जी ने हमें नाइट ड्यूटी दिया बेंगलुरु में, तो हम रात भर सुमरन करते घूमते थे. ऐसा सुमरन करते घूमने से रात भर सुमरन, क्योंकि सांप रहते थे, बिच्छू रहते थे, डर रहता था. तो डर होता है तो सुमरन अच्छा होता है. तो बाद में हम दो कुत्ते को अपना दोस्त बना लिए, वो लोग हमारे साथ रखते थे. तो अब हम निजरक हो गए. कुत्ते आगे आगे चलते, हम सुमरन करते पीछे पीछे चलते. तो कहते इस तरह 6 महीने लगातार रात भर सुमरन करने से और सत्संग में बैठे बाबा जी को देखते देखते विरह चालू हो जाए, आंख से पानी गिरने लगे और वो चढ़ाई करे, और हम आंख बंद नहीं करते थे क्योंकि बाबा जी के दर्शन की तड़प थी. तो वहाँ 1 घंटा दर्शन मिलता था सत्संग में, तो हम देखते रहते थे और हमारी रूह चढ़ाई कर जाती थी. तो कहते थे वो सुमरन में इतना ताकत है. I have experienced this power of Simran when I was given the night duty to look after the periphery of the ashram. It was a very large ashram and it was a long walk around the ashram. So Babaji had given me the duty to guard, to stand guard and go walk around the ashram. And I used to do Simran when I would go for that walk around the ashram. And there was fear because there were a lot of snakes, scorpions, and it was quite otherwise dangerous. So fear also helps us do our Simran. When we have fear, we may do more Simran. So I used to do that, and then later I kept 2 dogs with me, and then those dogs would walk in front and caution anything or if there was anything, and that made me a little made me fearless. So I could walk behind the dogs comfortably and do my Simran. So that way
in about 6 months' time, this Simran itself became so strong that when I would sit for satsang and Babaji would come, I had very strong pangs of separation from Babaji. I had vira, and then as soon as I saw him, tears would roll down my eyes and my soul would withdraw immediately. And I used to like keeping my eyes open and not close my eyes because I would love to see him. So that is the kind of power that Simran gives. इसीलिए सुमरन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम ज्यादातर सुमरन की महिमा करते हैं। सुमरन को पकाना चाहिए। पकाने का मतलब अपने आप सुमरन कर, मन से चलना चाहिए। मन से जब सुमरन चलने लगे तो कामयाबी होती है। Therefore, all the saints talk about the greatness of Simran, and I have been insisting on Simran all the time. So we should all work towards perfecting our Simran. By perfecting Simran, I mean that the Simran has to become automatic, that it should not be an effort to do Simran and it should continuously be going on in your mind. Bhakti ishka prema tino naam ved रूप समान। तो वही आपको सलाह देते हैं कि इसको भक्ति कह दो, प्रेम कह दो या तो इश्क कह दो, ये तीनों एक ही है। क्योंकि भक्ति को ही सच्चा नाम प्रेम है और उसी को मुस्लिम इश्क कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज है। अगर वो मालिक से मिलने का प्रेम प्रकट हो जाए, भक्ति प्रकट हो जाए, तो मालिक कहीं दूर नहीं। So you can call this devotion, you can call it love or affection to God Almighty or Sadguru. So whichever form, because devotion is a form of love. So whether you call it love or you call it devotion, it is the same thing. So once you have that love and affection and that devotion towards God Almighty, then He is not far away from you. तो कहते हैं इस तरह से अगर आप सुमरन लगातार करेंगे तो वो प्रेम ऑटोमेटिक आपके अंदर पैदा होगा, यानी विरह पैदा होगी, मालिक से मिलने का तड़प, और वो प्रेम जिसकी महिमा संतों ने की है। So when you do your Simran, it will automatically bring about that love and affection and that devotion within you, and you will automatically start getting the pangs of separation from God Almighty and your Sadguru. So all that happens automatically when you start doing more and more Simran. तो सुमरन ही हमारे अंदर वो गुण पैदा करता है, सुमरन ही हमें उस लायक बनाता है कि जो हम भक्ति पे चल सके। तो इसीलिए सब काम सुमरन करेगा, हमें खाली सुमरन के पीछे पड़ना है। So Simran only will bring about that attribute within you, which of this devotion and this love. It will only bring about that transformation within you. So all the work will be done by Simran. We only have to do Simran. अगर हमें गुरु से प्रेम प्यार होगा तो ही हम सुमरन करेंगे। अगर प्रेम प्यार नहीं होगा तो हम कभी सुमरन नहीं करेंगे। If we have love and affection towards our master, only then we will be able to do Simran. Otherwise the mind will never allow us to do Simran. क्योंकि हमारा प्रेम प्यार तो दुनिया के रंग में रंगा है, रात दिन दुनिया के चिंता में जुड़ गया है, तो हम सुमरन कहाँ से कर सकेंगे? Because our mind is so much outwardly focused on all the matters of this world and our relationships and our possessions and everything. It is so engrossed there that it will not be able to allow us to do Simran. हम सुमरन करने की कोशिश करते हैं, सुमन दुनिया का सुमरन लाके सामने खड़ा कर देता है, हम उसी में लग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हम सुमरन कर रहे हैं कि कहीं और भटक रहे हैं। So when we sit for meditation also, we start our Simran, then the mind brings the Simran of the world, and we start doing the Simran and the repetition of all the worldly things, and then we forget why we are sitting there, whether to do meditation, Simran, or to do think about the world. क्योंकि हमको दुनिया का सुमरन बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है करोड़ों जन्मों से, और ये अभी नया आदत डालना ये रुका फीका है। Because the mind is so used to thinking about the world and everything around it
for not only this life but for millions of our previous lives. The mind is used to that and it gets a lot of taste and comfort in doing so. And we are trying to put it into a new habit of doing this Simran, which is a new thing for the mind, and therefore it is a very dry thing, and therefore it doesn't like to do this. लेकिन कहते हैं कि अभ्यास बड़ी ऊंची चीज है, तरह तरह अभ्यास के जड़ को तो तुझा अभ्यास करते करते जड़ भी ज्ञानी हो जाता है, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है. So the practice is the essence of it, and it is emphasized that we need to do a lot of practice. It is said that even a practice transforms a person and transforms a man into God Almighty. So that is brought about by practice. Bhakti bhavaya guru mat jano aur mate sab man mat ठान प्रेम रूप तम परमात्मा भक्ति रूप सत नाम बखान. तो वही कहते हैं कि यही गुरुमत है. माने सदगुरु को भी भक्ति ही प्यारी है और बाकी जो है वो मनमत है, अपने मन से आप करना. अभी हम पूजा में बैठते हैं तो मन जो कुछ कहता वही करते हैं. दूसरे भी भक्ति में मन ही प्रधान होता है, लेकिन इस भक्ति में मन प्रधान है. मन को सुमरन से जोड़ना पड़ता है और वहाँ मन का कुछ नहीं चलता. This is Gurumat. This is the way of the saints, and this is what they tell us to do, which is to do our Simran. Any other practice that we do is Manmat, and Manmat is where we are led by the mind. So even if we are doing any deity worship or doing anything else, any other form of devotion, then it is the mind which is telling us to do so, and we follow the mind in those practices. But in Gurumat, the mind has to follow doing Simran. So it is something against what the mind is wanting to do. इसलिए कहते हैं कि भक्ति बहुत ऊंची चीज है और सब संतों ने भक्ति का रास्ता अपनाया है. ये भक्ति परमात्मा से मिलने का सच्चा रास्ता है और इसीलिए जो भी संत हो गए उन्होंने आगे पीछा नहीं देखा, भक्ति के जरिया में कूद पड़े और वो पार हो गए. So devotion is of a very high order, and that is why all the saints have sung the praise of devotion. And any saint which we see, they have not seen here and there or thought a lot on this. They have taken the plunge in the ocean of devotion, and they have not carried any worries about it with them. जैसे हम मोती निकालने के लिए दो लोग गए और मोती समुद्र के बहुत गहराई में होता है, जहाँ पे ऊपर सीपे तैरते रहते हैं वही मोती वाले सीपे अंदर होते हैं. तो ये लोग छोटे छोटे बोट होते हैं, खाली दो ही होते हैं, लेके जाते हैं और जाके वहाँ खड़ा करके उसमें एक आदमी नीचे जाता है और जाके जो भी सीपे मिलती है उसको थैली में डालते जाता है. तो उनको दूसरे जानवरों से लड़ाई भी करनी पड़ती है. So it's like the fishermen who go to look for pearls. They, if like two people who seek to get pearls, one of them goes in the boat, and in the boat, say two people go in a boat, and wherever there are oysters which have pearls, there are on the surface of the sea there are shells which float. So seeing that they dive into the ocean, and when they go down to the floor bottom of the ocean, there they collect these oysters and put them in a bag, and then they swim up. Now when they go down to the depths of the sea, then they have to run a lot of risk. There are other creatures in the sea, other bigger fish in the sea. So they have to struggle with all those fears and fight all of that and get the oysters to the boat. तो कहते अगर हम
ऐसे ही जीव निकालने के लिए जाएं और जाके नदी समुद्र के किनारे बैठ के डर के मारे, अरे तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, हम अंदर जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, बाल बच्चे का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, ये सब विचार करते बाहर बैठेंगे तो मुझे नहीं मिलता। So if we want pearls and we go on the seashore and there we look at the sea, the vastness of the sea and the big waves that are there, and we think about those waves, or we think about how deep the sea is, and we are scared of that, and we feel that maybe perhaps perish in that depth or in those waves, and what will happen of our families, what will happen of our work, and if we start thinking about all of this, it is you will not be able to sit there and get the pearls in your hand. तो कहते इस तरह से हमने संतों से भक्ति का रास्ता लिया और आगे पीछे करते रहे और आगे करेंगे, पीछे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, या तो और थोड़ा ये काम है पूरा होने के बाद करेंगे, और ऐसा ऐसा सोच के और एक दिन वो काल झपाटा मार जाता है और बाद काल विवाद और उठा के लेके चला जाता है। So like that in our devotion, when the masters have shown us the path and given us initiation, then after that if we sit there thinking and we just keep procrastinating, thinking that we'll do our meditation tomorrow, or we'll do it after a certain age, or we'll do it after a certain event, then all these things we keep planning, and then one day Kal in the form of a falcon, he will come and pick you up, and you will not get any time then to do that devotion. तो कहते इस तरह से नहीं, जो लोग मोती निकालने वाले होते हैं उनको मर्जी हुआ करते हैं, उनको अपने जान की मोह नहीं होती है, वो अंदर जा करके और जो है कि नीचे डुबकी लगा के वो मोती निकालते हैं। तो ऐसे संतों ने भी देखा भक्ति का रास्ता मुक्ति का सच्चा रास्ता है, और वो भक्ति के दरिया में कूद पड़े, वो पार हो गए, और हम आगे पीछा चलते रहे, हम किसी तरफ के नहीं। So that way, on this path of devotion, the saints, they have taken the plunge. It is like those boatmen who go in the sea and they dive into the ocean and they are able to extract those pearls. Like that, the masters, they have once been shown the path, they believe that path to be true, and that is the path which will give them salvation. Once so, they dive in and take a plunge in the ocean of devotion, and then they are able to cross it and swim towards salvation. And the others who have got initiated but are sitting on the shore like us, then we are thinking about that day in day out, but we are not taking that plunge. प्रेम रूप आत्मा परमात्मा, भक्ति रूप सत नाम बखान, भक्ति और भगवंत एक है, प्रेम रूप तू सत गुरु जान। तो यह इशारा देते हैं कि प्रेम रूप से आत्म प्रेम रूप आत्म परमात्मा कहते हैं। एक प्रेम आत्मा भी प्रेम रूप है, गुरु भी प्रेम रूप है, परमात्मा भी प्रेम रूप है। कहते तीनों प्रेमी है, और भक्ति रूप सतनाम बखान, वो परमात्मा, और जो ऊपर बैठा सतनाम परमात्मा, वो भक्ति का रूप है। वहाँ भक्ति का रूप हो कि अब उसमें समा सकते हैं। So he says that the soul, our Sadguru and Naam, all are different, all are forms of love, and it is love only. The soul is love, the Sadguru is love, and Naam is love, and that God Almighty is a form of love. That devotion for God Almighty is a form of love. उस प्रेम को बढ़ाने के लिए हमें प्रेम देना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है, क्योंकि हम अगर दूसरे से प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे प्रेम करेगा।
प्रेम किया था रखेंगे तो वो कहाँ से हमारे ऊपर प्रेम करेगा? So to get that love from God Almighty, we also have to extend our love towards God Almighty. So if we have someone whom we think ill of, and we expect that person to be loving towards us, that won't happen. We also have to extend the same love towards that person for him to love us. नाम लेने के कारण से वो परमात्मा हमारे से प्रेम प्यार करता है, वो चाहता है ये आत्मा हमारे पास आए, हाँ, लेकिन हम उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं, तो गलती परमात्मा करने। When we are initiated, God Almighty has extended His love to us, and He is expecting us to follow the path and come to Him. But then if we don't do our devotion, we don't do our practices, then it is not His fault, it is our fault. अगर हम उससे प्रेम प्यार करें, हम भक्ति में आगे बढ़े, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो 10 कदम हमारी तरफ आएगा, तो जल्दी ही दरवाजा खुल जाएगा। If we do our devotion, then we extend our love to Him. When we take one step of love towards Him, He takes 10 steps of love towards us. So that way, the path going back to God Almighty becomes faster. हम दुनिया में दुखी हैं, रात दिन दुनिया में दुखी देख के अब पिता परमात्मा को भी दुख होता है, वो चाहता है इससे छुटकारा पा ले और जल्दी हमारे पास आके अपने देश आनंद के समुद्र में रहे। When God Almighty sees us suffering, He is seeing us suffering, and He is also sad because of that. He hopes that we follow this path of devotion and come to Him fast, so that He can give us that perpetual bliss in His kingdom and take us there. भक्ति और भगवंत एक है, प्रेम रूप तू सतगुरु जान, प्रेम रूप तेरा भी बाई, सब जीवन को योई मान। तो वही आप कहते हैं कि भक्त रूप भगवंत एक है, वो भी भक्ति का ही रूप है परमात्मा, और प्रेम रूप तुम्हारा है और प्रेम रूप गुरु का भी है। अगर आप वो प्रेम लेके परमात्मा की भक्ति करेंगे तो वो जरूर दर्शन दे देगा। So God is also another form of devotion. He is another form of love and devotion. Our soul is also love, and our Sadguru is also love, and Nam is also love. So if we extend that love and devotion towards God Almighty, He will also shower His grace upon us. हृदय जितने भी आत्माएं हैं तो प्रेम रूप है, हमें एक दूसरे से प्रेम और प्यार करना चाहिए। प्रेम प्यार से ही प्रेम बढ़ता है और मालिक से नजदीकी बढ़ती है। All the souls, they are forms of love, and therefore we should always love all the souls, because by love only, love increases. एक भेद या में पहचानो, कहीं बूंद कहीं लहर समान, कहीं सिंध सम करे प्रकाशा, कहीं सोत और पोत कहान। तो इस स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा भी प्रेम रूप, आत्मा भी प्रेम और गुरु भी, लेकिन फर्क इतना है कि हम बूंद के रूप में हैं, बिंदु के रूप में आकार के हैं, और वो गुरु लहर के समान, नदी के समान, और वो परमात्मा समुद्र के समान, लेकिन है तीनों पानी ही। So he says that all the soul, our Sadguru and God Almighty, all are forms of love, all are manifestations of love. Only the difference is that the soul is like a drop
a droplet of water, and the master is like a wave or like a river, and God Almighty is like an ocean. तो कहते हैं बूंद भी पानी है, लहर भी पानी है, और समुद्र भी पानी है। तो कहते हैं ये सारी नदियां समुद्र से निकलती हैं और फिर समुद्र में ही जाके मिलती हैं। अगर ये बूंद नदी में मिल जाए तो नदी उससे लेकर समुद्र में समा जाए। So all the soul, our Sadguru and God Almighty, all are love and all are the same form. Like the God Almighty is the sea, and from the sea only it creates rain, and then that rain creates rivers, and the rivers flow back to the sea. So like that, if that drop, which is the soul, it merges with the river, which is Sadguru, then the Sadguru will take that drop back to the ocean. तो कहते हैं तीनों पानी है, तीनों एक है, एक जगह समुद्र के समान, एक जगह नदी के समान और एक जगह बिंदु बरसात के बिंदु के बराबर। तो आत्मा सब एक बिंदु के बराबर ही है। अगर जो प्रेम प्यार आत्मा का बाहर लग गया है दुनियावी चीजों में और दुनिया के रंग में रंग गया है, वही अगर प्रेम प्यार अगर मालिक से या तो सद्गुरु से लग जाए तो काम बनने में कोई देरी नहीं होती। So all are of the same essence, God Almighty, Sadguru and our soul. All are forms of love. It's like the ocean, the river and the drop. And so the soul is like that drop of water. And only thing is that currently that drop of water is outwardly focused and it is in love with the rest of the world. And when it directs that love towards the river, then it will merge with the river and flow back to God Almighty. अगर सच्चा प्रेम प्यार गुरु से आ जाए तो आत्मा तो प्रेम रूप है, गुरु भी प्रेम रूप है, दोनों मिलके और फिर परमात्मा भी प्रेम रूप है, उसमें समा जाए। The true essence is love, and when that realization is there and that devotion is there, then it doesn't take long because the soul is also of the form of love and the master is also of the form of love. So when the soul directs itself towards the Sadguru, then they flow back into God, who is also form of love. कई चापर बल होए बेटी, कई हुई माया बलवान, एक ठिकाने माया तोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आन। तो कहते हैं कि आत्मा में कहते हैं कि मोह माया से वो ग्रसित हो गई, इस मलिन हो गई और अपने पिता को भी भूल गई और प्रेम इन दुनियावी चीजों से कर लिया और मालिक से गुरु से दूर हो गई। तो कहते हैं कि एक जगह मोह माने की मलिन आशा तृष्णा भरी है और एक जगह थोड़ा कम है, वो मालिक का दर्शन किया और वो पवित्र हो गया और बाद में वो परमात्मा जो पवित्र ही पवित्र है, पुत्र सत्य ही सत्य है। So again these three forms, he says, the soul, that drop of water has become soiled and that has become soiled with the mud around it. So like that the soul, that is soiled by the mind and the desires which draw it out. So that maligns the mind and the soul with the attachments that it has around it. And the other is the master who is connected to God Almighty. So he is in a purer form, but the purest form is God Almighty, which is the ocean. So that way he describes the soul which is soiled, the river which is trying to take that drop back to the ocean, and then the purest form is God Almighty, which is the ocean.
तो कहते हैं इसी तरह से अगर हम हमारे अंदर जो प्रेम दुनिया की तरफ गया वो प्रेम आ जाए, अगर हम गुरु से प्रेम कर लें तो गुरु परमात्मा से जुड़ा है, वो फिर दर्शन अपने से जोड़ के परमात्मा से जुड़ा देता है। इसीलिए नामदान के दिन गुरु अंदर जाके हमारी आत्मा को सबसे से जोड़ता है। So that love and affection which we have for the world outside, if that is directed towards our Sadguru, then he will take us back to God Almighty. At the time of initiation, the master ties the soul to the holy sound current. और सबसे जोड़ के आत्मा को अपना बना देता है और काल से उसका कोई नाता नहीं रखता है। So by doing so, he ties the soul to the holy sound current and keeps the account of the soul with himself. And thereafter there is no connection between Kal and that soul. इसीलिए रात में रहने के लिए गुरु को आना पड़ता है। And therefore at the time of death, he has to come to fetch the soul. सोत पोत में माया नाई, वहाँ प्रेम ही प्रेम रहान, वह भंडार प्रेम का बारी, जाका आदिन अंत दिखान। तो वही कहते हैं कि इस तरह से आत्मा माया ग्रसित हो गई, इसमें माया का प्रभाव है और सोत प्रोत में माया नहीं, और जो नदी में और समुद्र पवित्र है वो माया से रहित है। हाँ, अगर ये जाके जैसे गंगा नाला गंगा से मिल जाता है तो वो भी पवित्र हो जाता है, गंगोदक बन जाता है। So he says that the soul has the element of Maya. It has all the vices which Maya has cast upon it. And when it gets connected with the river, that drop gets cleansed and it becomes the form of the river and goes back to the ocean, which is the purest form, and there is no effect of Maya at all on the ocean. So like that, if we see a sewage that goes into a river, that it loses the identity of a sewage and it becomes the river, and in fact it becomes pure and is considered pure like the river, and that river then flows and takes it back to the purest form of the ocean. वह भंडार प्रेम का भारी, जाका आदिन अंत दिखान, बिना संत पहुँचे नहीं कोई, सतगुरु संत की स्थान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो परमात्मा का स्थान वो माया से रहित है और वो एकदम निर्मल है, वो अमृत का भंडार है, वहाँ हमेशा आनंद ही आनंद है। So Swamiji Maharaj says that God Almighty, He is completely devoid of Maya, and there the nectar flows and there is a perpetual bliss. जो भी आत्माएं वहाँ गुरु के कृपा से पहुँच जाती हैं वो भी निर्मल हो जाती हैं, उनका दर्शन करके, और उसमें सूर्य का प्रकाश आने लगता है और वो वहाँ से ये सारी दुनिया नजर आती है। So when the soul is also taken back by the Master to God Almighty, the soul also becomes pure and it also starts radiating the luminance of 16 suns. And from there it can see all the worlds. तो कहते हैं आत्मा पवित्र हो जाती है, आत्मा परमात्मा के साथ बड़े आनंद में रहती है। Then the soul becomes very pure and it stays in bliss with God Almighty. बिना संत पहुँचे नहीं कोई, सतगुरु संत किया स्थान। तो यह कहते हैं वहाँ पे संतों के अलावा कोई पहुँच नहीं सका,
संत हैं, सदगुरु हैं, वही गए और वही वो परमात्मा का दर्शन किए और जीवों को भी कराते हैं। So he says that without other than Sadgurus, other than the saints, no one has gone there. And it is these saints who come and they get salvation to the soul and take the soul back to God Almighty. प्रेम भक्ति की ऐसी महिमा, ग्रहण करो ये अमृत खान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेम और भक्ति की ऐसी महिमा है, कहते इसको ग्रहण करो, अपने अंदर प्रेम और प्यार पैदा करो, क्योंकि मालिक पहले गुरु को अंदर प्रकट करने के लिए ही प्रेम की जरूरत है। अगर गुरु के अंदर आप जाते हैं, गुरु से मिल जाते हैं, तो गुरु परमात्मा से मिला है और आपका प्रेम दिन दिन बढ़ते जाएगा और वो गुरु तुम्हें लेके परमात्मा से मिला देगा। So Swamiji Maharaj says that that is the greatness of love and devotion. So you should absorb that love and devotion. Now to go within and to manifest the master, we need that love and devotion. Once we have done that, then the master is connected to God Almighty and he is flowing with that love and affection, and automatically once the mind, the soul merges with the Sadguru, then it also starts reflecting that devotion and love. ताते पहले करो भक्ति गुरु, पीछे पाओ नाम निशान। आरत कर कर गुरु रिझाओ, पाओ उनसे प्रेम निदान। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते, इसलिए पहले गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति का मतलब कि गुरु को अंदर प्रकट करना। गुरु भक्ति का मतलब ये नहीं कि स्नान करके गुरु को हार पहना देना, अगरबत्ती जला देना, बस हो गया भक्ति। तो कहते ये कर्म कांड हो गया। तो कहते हैं कि गुरु को अंदर प्रकट करना, वो सच्ची गुरु भक्ति है। वो कैसे होगा? सुमरन भजन, सुमरन ध्यान ज्यादा से ज्यादा करके ये 9 दरवाजे से 10वें में आना और गुरु को प्रकट करना। तो जब गुरु प्रकट हो गया तो आपका काम बन गया। तो गुरु अपनी सारी बरकत लेके आपके अंदर बैठ जाता है, आपको कोई कमी नहीं रहती है। तो इसीलिए पहले गुरु भक्ति और फिर गुरु के जरिए हमें वो परमात्मा से मिलना है। वो एजेंट है, क्योंकि उसके बगैर हम वहां नहीं पहुंच सकते। So he says the first step of that devotion is to do Guru Bhakti or the devotion of our master. And by devotion of our master, what he means is that we should be able to manifest the radiant form of the master within us. And for that we have to do our Simran and Dhyan. The devotion of the master or the Guru Bhakti is not that we garland our master or we put incense sticks in front of him. That is not the devotion that is being asked of us. What is being asked is that on the teachings of the master we follow that and we do our bhajan, simran, dhyan, and we manifest his radiant form within. Once that radiant form is manifested, then he sits with all the bliss and strength of God Almighty inside, and then he leaves nothing short. There are no shortcomings after that. And he is like the river which flows back to God Almighty, and he takes us there. तो कहते हैं पहले गुरु भक्ति, फिर नाम भक्ति। जब हम 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में जाते हैं, गुरु प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है, तब सुमरन की जरूरत नहीं। तो कहते ये हो गया, गुरु भक्ति पूरी हो गई। तो आगे गुरु की कृपा से अनादनाद और ज्योति प्रकट हो जाती है।
खाली सुनना और देखना वही नाम भक्ति है। So the first step is this devotion, which we do by Simran. We clear the 9 doors, come to the 10th door, and there we manifest the radiant form of the Master, and we manifest with His grace the sound current. Till then, it is Guru Bhakti, or it is the devotion of our Master till then, and Simran takes us there. Once we have manifested that radiant form of the Master and the sound current, then it is only about listening to that sound current and about seeing the light within. So that is the Bhakti of Nam. After that is the second stage. वो सुमरन को खत्म हो गया, खाली सुनना और देखना और गुरु सामने होता है, तो सबसे कर्म करते जाते वो नाम भक्ति है। So after that the course of Simran is over. Simran takes us to our radiant Sadguru within, and after that it is only a practice of listening to that sound current and seeing the light within, and our Master is always there within us. तो वो शब्द ही हमें वो हर मंडल में मंडल बाय मंडल ऊपर लेके जाता है। And after that it is the sound current which takes us up. But from one plane to the other, the sound current only takes us further. आरत कर कर गुरु रिजाओ, पाओ उनसे प्रेम निदान। राधा स्वामी कहत सुना आई, मिला तुझे अब भक्ति दान। तो ये स्वामी जी महाराज आज में कहते हैं आरत कर कर गुरु रिझाओ, कभी इस तरह की आरती करो। आरती का मतलब ये नहीं जैसे हम बाहर करते हैं घी की बत्ती लेके या तो कर्पूर लेके थाली में और गुरु के सामने आरती करना है, ऐसी बात नहीं। आरत बाहर से अपने ख्याल को अंदर लाना और उस ताकत से मिलना, ये सच्ची आरती है। एक बार आप अंदर आ गए, गुरु प्रकट हो गया, संत प्रकट हो गया, तो वहाँ सच्ची आरती होती है। वहाँ हजारों दीवा जलते रहते हैं, घंटा शंख अपने आप बजते रहते हैं, और वो सच्ची गुरु की आरती अंदर में है, तो वो आरती के लिए करते हैं। ये बाहरी आरती को संत नहीं मानते। So the Swamiji Maharaj says that do the devotion of your master and do the arti of your master. The arti, as is generally understood, is to take a lamp on a plate and take some incense, flowers, and then offer that to a deity or offer that to whoever you are worshipping. So Swamiji Maharaj is not referring to that. He is saying the arti is different. Arat is what he is referring to. Arat means to withdraw from the outer senses and come within and focus at the eye center and manifest the radiant form of the Master there. So when we do that, he is talking about that Arat, and when we do that, there is a arti which is going on within. That arti within is where hundreds of bells are ringing on their own, and there millions of lamps are lit on their own, and there we do the real puja of the Master. So that is happening on its own. So in Sanskrit, that is the arti that is being referred to. It is not the outwardly arti of showing incense and lamp in front of the Master. और इस तरह से आपकी रूह अंदर जाएगी, शब्द से जुड़ेगी, तो गुरु को होता है और गुरु हमें ऊपर के मंडल में ले जाता है। So when we manifest him and we get connected to the sound current, then the Master becomes very pleased with us, and then he takes us to the higher planes. आरत कर कर गुरु रिजाओ, पाओ उनसे प्रेम निदान। राधा स्वामी कहत सुना आई, मिला तुझे अब भक्ति दान। तो ये स्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्मा ने आपको भक्ति का दान दिया है,
अब इस तरह की भक्ति करके गुरु को खुश कर दो। गुरु राजी तो करता राजी, काल करण भी करे न बाजी। गुरु खुश है, परमात्मा खुश है। तो कहते हैं गुरु को अंदर प्रकट कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। So Swamiji Maharaj says that now that you have been initiated, you have been shown the path by the master, you do your devotion, you follow what he is saying, and you manifest his radiant form within you. And if you do that and you get the pleasure of the master, then if he is happy, then even God Almighty is happy. And no other form of Kal or Mahakal or anybody like that will come in your way to going back to God Almighty. तो इसीलिए आपको परमात्मा ने भक्ति का दान दिया है, मानव शरीर मिला है, भक्ति करो। ये दुनियादारी, दुनिया का सामान, ये हम कितने जन्म करते आए हैं। अगर जो चीज नहीं किया है वो भक्ति, अगर भक्ति पहले किया होता तो आज हम सतलोक में होते। तो कहते वो हमने कभी नहीं किया। तो अपने आत्मा को इस दुख से निकालने के लिए सब तरह से मन को मोड़ना, सदगुरु से जोड़ना, प्रेम प्यार गुरु के चरणों में ला के रख देना, गुरु का बन के दुनिया में रखना, तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। This life has been given to you for your devotion, and in this life you have the company of the masters. So this is a lot of grace that has been showered on you by God Almighty, and that He has got you in the company of the masters, and He has given you an opportunity to do your devotion. So you have to spend your life and spend your time doing that devotion. It is only in this life that you have got that opportunity. You have come into this world millions of times and you have taken millions of lives. But in all of those lives, you have focused on all the worldly matters, and you have never had this opportunity of devotion which you have now. And now also, if we are spending time in the outwardly things and trying to focus in worldly matters, then we are also wasting this opportunity. Had you been given this opportunity of devotion in your earlier lives, then you would not be here in this world. Right now you would be in Sachkhand. So the fact that you are here and you have been given this opportunity, make the most of it. Make the use of the true purpose for which you have been given this opportunity. So you draw your, make your mind bent towards devotion, pull it out from everything else that pulls it out, and do the devotion as your master has told you, and stay in this world as if the world belongs to the master and you are doing your duties in this world. So that way you will be able to do your devotion and give time to it. आज जो दूसरे गुरु का 10 दिन का प्रोग्राम आज समाप्त हो रहा है, बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना दूर से अपनी कीमती समय को दे करके यहाँ आकर के ध्यान का प्रोग्राम सार्थक बनाया। हम बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि वो आपके ऊपर अपने दया बनाए रखे और आपका भजन सुमरन बढ़े, कि आप उनके नजदीक जाए। So today is the last day of the second group in this program. I am very happy and I am thankful that all of you have taken out your precious time from your routine and you have come here and participated in this meditation program and made this program successful. I pray to my masters that they extend their grace upon you, they shower their grace upon you, so that you do more and more Simran and you do more and more Bhajan and you get closer and closer to your Sadgurus. आप लोगों ने यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग मिला है, ऐसे ही जाकर के घर पे भी टाइम टेबल लिख के बैठे हैं, जिनको अभी बहुत सारे लोग रिटायरमेंट वाले ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादातर भजन सुमरन की तरफ ख्याल करना चाहिए, और करते रहेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप इसी जन्म में अपने मकसद को पूरा कर लेंगे और गुरु की कृपा के पात्र बन जाएंगे।
So in these days that we have that you have come here and participated in the program, the practice that you have done and the training that you have here, you should use this same practice when you go home. And just like you have been sitting for meditation here, you should make it a point and a part of your routine when you go back to do this, to spend time doing your meditation. A lot of the people who are participating are people who have retired from their work and therefore have that time to do the meditations, and more and more time should be given for meditations, so that in this life itself you will become successful and you will actually achieve the purpose of this life, and you will be successful on this path. और जो लोग नौकरी धंधे पे हैं उनसे भी हमारी विनती रहेगी कि वो लोग भी टाइम टेबल रख के जिस समय खाली रहते हैं अपने भजन सुमरन के लिए जरूर समय दें, जो कि यही अपना सच्चा काम है। बाकी जो रात दिन करते हैं सब पराया काम है। Those also who are working or employed, they also, I request all of them also to take out time in their routine to do the meditation, and as much time as possible, if they can, whenever they are free or they can spare, they should spend that in doing their devotion. आप लोग ना सोचें कि हमारे महाराज जी चोला छोड़ गए हैं। संत हमेशा करते आए हैं, संत कभी मरते नहीं, उनकी आत्मा अमर होती है, वो हमेशा जिंदा हैं, वो ब्रह्म में बैठ के आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप उन्हीं का ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। And you should never feel that your masters have left you as they have left their physical bodies. Saints always say that the masters never die, they are immortal, and the Sadguru is all sitting in Brahma and he is taking care of you and your soul. So you should always have that faith in him and do his devotion. So each one of you should do the devotion of your Sadguru. जो कि मन को खा देता है और धीरे धीरे को सुमरन भजन से दूर कर देता है, हमें उसी तरफ ख्याल रखनी चाहिए और सुमरन भजन से दूर नहीं होना चाहिए। The mind deludes us, and every time it tries to take us away from our Simran and Dhyan, and we should be very careful about this and attentive about this and not allow the mind to do so. So we should try to make sure that we are connected to Simran and Dhyan throughout. और यहाँ पे आप लोगों ने जो भी दिन बिताए उसके अंदर किसी सेवादार से या तो यहाँ के संगत से अगर कोई गलती हो गई हो, आपका दिल दुखा हो उनके वाक्य से, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आप लोग प्रेम प्यार ही देखे थे। And during this program, if because of any sevadar or any other sangat here, or any sangat, if someone has hurt you, then my request is that you don't carry it in your heart and forgive them, and I beg for that forgiveness, so that you, when you go home, you only carry love and affection back with you. आप सब बाबा जी के बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, सबको बहुत बहुत I will pray for Babaji to shower all his grace upon you, and thank you very much. Sat Purush
परगट करके शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए भव सागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सत गुरुगत चीना जगमग ज्योत होत उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा श्वेत सिंहासन क्षेत्र विराजे अनहद शब्द गैब धुन गाजे शर अक्षरनी अक्षर पारा विनंती करे जहाँ दास तुम्हारा लोक आलोक पाऊ सुख दामा चरण शरण दीजे विसरामा करू विनंती दो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी आज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी राधा